Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics. आज की वीडियो में हम बात करेंगे types of cost. This is about cost and revenue analysis. So before moving ahead with cost and revenue analysis, हम चाहते हैं कि आपको ये पता हो कि कौन सी various types of costs हैं जो आपको जानना जरूरी है. Then only we'll move ahead with the markets. So let's start with the topic. I believe that if you are going to stay connected to this lecture throughout, you will have a proper and better understanding. कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिकॉज ये कुछ ऐसी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है जिसको लेके कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के दिमाग में रहता है. तो आज कोशिश यही है कि इन सारे कंफ्यूजन और डाउट्स को क्लियर कर दें. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो कि कॉस्ट होती क्या है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. कोई भी चीज वो खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए, उसको कुछ भी मशीनरी परचेज कर रहा है, तो एनीथिंग वॉट एवर ही इज बाइंग इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द बिजनेस, इन ऑर्डर टू विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, तो उसके लिए ही हैज टू मेक अ पेमेंट. सो दैट पेमेंट इज नोन एज कॉस्ट. इफ यू टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लेने गए, आपने कुछ पसंद किया, आपने कुछ परचेज किया, सो फॉर दैट यू हैव टू मेक अ पेमेंट. So that is referred as cost. So what actually cost is? It refers to the amount of payment made to acquire any goods or services. वो पैसा, वो payment, वो amount जो आप किसी चीज को खरीदने के लिए दे रहे हैं. Next important thing that you need to know, this is very confusing because these sare terms, they appear different, but still you find some connection between them. So let's see what are these. पहला यहाँ आप देख सकते हैं, there are 7 types of cost that we are going to discuss today. Opportunity cost, explicit, implicit, accounting, fixed, variable, incremental. Out of these costs कुछ आपने पढ़ी होंगी, कुछ के बारे में आप जानते होंगे, but आज इन सारी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है और क्या आपको समझना चाहिए, क्या आपको मालूम होना चाहिए इस पर्टिकुलर कॉस्ट के बारे में, that we are going to discuss. Starting with the first cost, the other name for opportunity cost is your alternative cost or your alternate cost. ये होती क्या है? Suppose for example it talks about the next best alternative available. हम क्यों बात कर रहे हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. द ऑर्गेनाइजेशन और दी, इफ यू टॉक अबाउट अ कंज्यूमर, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको ये समझना है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव $50, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव $50, out of which you have to decide कि वो $50 आपको कहाँ खर्च करना है. You want to spend that $50 on watching a movie, or you want to spend that $50 on buying a book. So the choice is yours. Whichever you find more important, whichever you believe is cannot be foregone or which cannot be sacrificed, so you have to spend. You are planning to spend on that particular thing. So opportunity cost, what does it say? That out of the two options available, you have to select the one which you find more feasible, which you consider more acceptable, and which you consider more important. ये है opportunity cost. Let's see what does it says. It may be defined as the return from the second best use of firm's limited resources, which it forgoes in order to benefit from the best use of these resources. It is also referred to as an alternative cost. इसीलिए इसे alternative cost भी कहा जाता है. एक कंफ्यूजन होता है कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही इकोनॉमिक कॉस्ट है. आंसर इज दे आर क्वाइट सिमिलर ऑन द ग्राउंड. व्हाई एम आई सेइंग इट सिमिलर? इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी टॉक अबाउट choice of an individual requirement. For example, हम एक चीज को चुनते हैं, that out of two we have to select one which is more beneficial to us. जब हम किसी चीज का इंडिविजुअल इफेक्ट देखते हैं, that will be your opportunity cost. बट जब हम सिलेक्शन करते हैं, मीन्स हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आउट ऑफ टू ऑप्शंस व्हेन वी आर मेकिंग अ सिलेक्शन, और हम उसका ओवरऑल असर देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी दैट व्हाट वुड बी द ओवरऑल इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग, if we are investing on watching a movie, what will be the overall profit or loss we are going to get? So when we're talking about overall effect, that's your economics cost or economic cost. Or when we're talking about individual effect, then it's your opportunity cost, but the concept is same. So I guess this cost is clear to everyone. Now coming to another cost, that is explicit. These are the costs which are very confusing, explicit and implicit.
एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती वो कॉस्ट है जो सारा पेमेंट, जो सारी कॉस्ट एम्प्लॉयर द्वारा इनकर की जाती है, मीन्स द अमाउंट और द पेमेंट दैट हैव बीन डन बाय द एम्प्लॉयर. फॉर एग्जाम्पल, the purchase of raw material, anything, purchase of machinery, anything. In order to purchase anything, the amount that is paid by the employer, that is known as your explicit cost. इसमें wages and everything that is considered into your explicit cost. It says also referred as an actual cost because those payment that the employer makes to purchase or own the factors of production, means in order to obtain the factors of production, in order to make use of factors of production, the payment that is done by the manufacturer is your explicit cost. फिर ये implicit cost कौन सी होती है? Implicit cost basically it is also known as your intangible cost. Intangible cost ये होती है, मीन्स इसके लिए कुछ नया सेटअप नहीं होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसी में क्या नुकसान हुआ या क्या उसमें चेंज आया, दैट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट अबाउट टॉक्स अबाउट द डेप्रिसिएशन इन द मशीनरी और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, और यू कैन से लॉस or loss in the interest of funds or any loss that has occurred, that would be considered as your implicit cost. Let me give you an example to make it more clear. For example, due to some reason, a factory is closed down for a day. Means किसी वजह से factory बंद हुई है. The purpose is that to get the machineries serviced or repaired. Machinery की maintenance और servicing की वजह से क्या हुआ? Factory एक दिन के लिए close हो गई है. So now it is clear that for maintenance and you can say repair of the machinery, 50,000 is going to be exhausted. So that 50,000 is your explicit cost क्योंकि सबको नजर आ रही है. What is an implicit cost? Implicit cost will be the time. For example, हर एम्प्लॉय रोज ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में 8 घंटे दे रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे क्या है, फैक्ट्री इज क्लोज, सो नो वन इज वर्किंग. So that 8 hours of each of the employees are wasted. अगर वो काम पे आते, that would have been utilized for some other effective or productive work, लेकिन वो काम पे नहीं आए. So this is your implicit cost where the organization or the factory suffers a loss. So this is your implicit cost. कुछ नया प्लान सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो existing है उसमें क्या लॉस, क्या डेप्रिसिएशन हुआ है, that is your implicit cost. So explicit और implicit का ये concept है. फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन टू मी और लेट मी नो सो दैट आई कुड एक्सप्लेन अगेन. क्योंकि ये सारी चीजें समझना इसलिए जरूरी है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस व्हेन विल बी मूविंग अहेड विद द मार्केट्स. फिर आती है अकाउंटिंग कॉस्ट. ये कौन सी कॉस्ट है? अकाउंटिंग कॉस्ट बेसिकली व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस और when all the purchases or everything is calculated or valued in monetary terms. जब हम किसी भी चीज को या हर खर्च को monetary terms में वैल्यू करते हैं, उसको गिन सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, that is your accounting cost. So it says accounting costs include the financial expenditure incurred by a firm in acquiring inputs for the production of a commodity. Accounting costs are recorded in the books of accounts of a firm and appear on the firm's income statement. ये accounts की बुक में रिकॉर्ड की जाती है. कुछ भी परचेज हो रहा है, कोई मशीनरी आ रही है, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है. तो there must be one question that will be coming, that is coming to your mind कि explicit और अकाउंटिंग में क्या फर्क है. explicit cost भी परचेज की बात करती है, जो एम्प्लॉयर्स ऑफ पेमेंट करता है. यहाँ भी परचेज की बात हो रही है, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, और एक्सप्लिसिट की भी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज अकाउंटिंग कॉस्ट considers depreciation whereas explicit cost does not consider depreciation. इम्प्लिसिट कॉस्ट की कोई रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होती है, क्योंकि ये बात करती है टाइम का लॉस हो गया, आवर्स का लॉस हो गया, वैल्यू कम हो गई, तो ये जनरलाइज बात करती है. नाउ कमिंग टू अनदर कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो कॉस्ट है जो इनकर हो नहीं होना है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स चाहे प्रोडक्शन बढ़े घटे, बट इट हैज टू बी इनकर्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री को रेंट पे लिया गया और एक प्लेस को रेंट पे लिया गया है, भले ही किसी वजह से दैट फैक्ट्री इज क्लोज फॉर 15 डेज इन अ मंथ, एक महीने में 15 दिन के लिए फैक्ट्री बंद है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं. जब व्हेन यू आर गोइंग टू पे द रेंट, यू हैव टू पे इट फॉर द एंटायर मंथ. सपोज इट्स फॉर 3,000 और 5,000, तो जो भी अमाउंट है दैट हैज टू बी इनकर्ड. So fixed cost is the cost that has to be incurred irrespective of anything. It's like rent, taxes, all this is considered under your fixed cost. नेक्स्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है विच इज सस्पेक्टेबल टू चेंज और विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट. इट सेज
This refers to the costs that are directly dependent upon the output level of the firm. In other words, variable cost vary with the changes in the volume or level of output. Mean जैसे output change होता है ये change होती है. Example commission. Example wages to labor. अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या लेबर को पेमेंट किया जाएगा? नहीं. जिस दिन काम करेगा उस दिन पे किया जाएगा. So that is your variable cost. अगर काम ज्यादा है, production is more, so what you are going to do? You are going to employ more laborers, so you are going to pay them more. But if work is less, you are not inviting them, you are not asking them to come, so you are not going to make a payment to them. So ये है आपकी variable cost. आखिरी कॉस्ट जो है वो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशन, एक्स्ट्रा. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी 100 यूनिट बना रही है कमोडिटी एक्स की, तब उसकी कॉस्ट है 2000. नाउ दे थॉट ऑफ इंक्रीजिंग और एक्सपैंडिंग द बिजनेस. अब वो एक नया यूनिट बना रहे हैं, अब वो कमोडिटी वाई बना रहे हैं, 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई, और उसके लिए प्राइस लग रहा है 1500 रुपए और 1500. सो नाउ व्हाट विल बी योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट? इफ यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, आप 2000 नहीं कहेंगे, आप 1500, आप 2000 plus 1500 3500 नहीं कहेंगे. Your answer will be 1500. The incremental units are 100 and the incremental cost is 1500. So the cost, that is extra addition of cost in order to produce more units of output, that is your incremental cost. It says incremental cost is the total cost incurred due to an additional unit of product being produced. Incremental cost is calculated by analyzing the additional expenses involved in the production process, such as raw material, for one additional unit of production. So these are some of the types of cost. These are the 7 main types of cost that you need to know. फिर भी अगर कोई डाउट हुआ है या कोई कंफ्यूजन है या फिर भी कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो प्लीज फील फ्री टू राइट इन टू मी और लेट मी नो कि ये कंसेप्ट नहीं क्लियर है. सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन in the next lecture. I am going to start with the concept of cost, and then we'll be moving ahead with the various types of cost curves, and then accordingly we'll move to the markets. So stay tuned for getting the best understanding of the concepts of economics. The only purpose is to make it more simpler and easier for your understanding, because I know these are the concepts which are not easily understood through books. So कोशिश यही है कि ये आपको और अच्छे से समझ में आए, और जो भी डाउट है आप हमें बताइए. I'm there for you. I'm here to help you out. So that's all for the day. Keep studying, keep learning, and stay tuned to your channel. Thank you, everyone. God bless.